So hey guys, welcome back to the another stream. And today we will going to discuss important topic. It's a related of securing the cloud infrastructure resources. You know that we have already started one series called CompTIA Cloud Plus training program, which I usually uploading or updating the some content of related to the CompTIA skills. So it is based on both on like hybrid cloud infrastructure and like cloud infrastructures. Okay, so the topic is today's topic is like we will discuss about the securing the cloud infrastructure resources. So this is here the securing cloud infrastructure actually like it's like a encrypt the resources, whether it is in on-prem or like hybrid infrastructure or the cloud infrastructures. So generally we will talk on this. So yeah, like let's start it. So आज हम देखेंगे कि like how कैसे हम लोग apply करेंगे encryption to resource. So applying encryption resources is not something new. Okay, so it's been used for years to add security to the physical devices, right? So making it harder for attacker to gain access to sensitive data in this exercise we will encrypt a VM, OS and data disk in the Azure platform, right? So after completing this exercise we will able to explain that like how we can encrypt Azure OS and data disk, right? How we can secure. So let's move to the lab. जैसे कि आप देख सकते हैं लाइक आप जानते हैं लाइक एक्चुअली क्या होता है ना, as more organizations move to the cloud, okay, so it easy to forget like resources in Azure still have a physical form, right? So in house to like Microsoft data centers, the newly spin virtual machines is created on physical devices. So encrypting resources adds additional layer of security to these devices, right? So first of all, if you have आपके पास अगर Azure portal है then you can log in that account. आप जैसे लॉग इन करोगे वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट रिसोर्सेज और यू कैन क्रिएट अ वर्चुअल मशीन फ्रॉम हियर ओनली, ठीक है? मैं डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ लाइक क्रिएट रिसोर्सेज. अब जाओगे ओके, देन आप like you can click here to create a virtual machines. It's very easy process. Okay, so here as per the requirement मेरा रिसोर्स ग्रुप जो भी है मैं सिलेक्ट करूँगा. ओके, मेरे रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट होने के बाद मैं यहाँ पर वर्चुअल मशीन्स का नाम दूंगा अभी. ओके, सो आप कुछ भी दे सकते हैं लाइक अब मैं दे रहा हूँ पी लैब स्टैब -VM. ओके, ये होने के बाद यस अवेलेबिलिटी जोन, डोंट नीड लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी, ये स्टैंडर्ड कर देता हूँ. एंड स्क्रॉल डाउन. आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पर आपको इमेज लाइक ऑप्शन आएगा, तो आप चूज़ कर सकते हो दिस वन, दिस विंडोज़ 2019 डाटा सेंटर Gen 1. ओके, and CPU according to the size you can select. and मैं अभी यूज़र नेम पासवर्ड मैं प्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे.
what happened. Okay, let's give the username. Let's create this. Simple create. And in the deployment process, let's have a deployment. ये इसको अभी ये प्रोसेसिंग में चल रहा है. ओके, वंस ये होने के बाद वी विल सी लाइक इसको करना क्या होगा. मैं यहाँ पे पोज कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए. ओके कूल, हमने डिप्लॉय कर दिया और सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया हम लोग का वर्चुअल मशीन्स. नाउ वी विल सी दैट व्हाट आर द like features are there to encrypt the disk. Okay, तो आप यहाँ पर आ सकते हो, लाइक क्रिएटेड अ वर्चुअल मशीन में क्लिक कर सकते हो. देन यू कैन सिलेक्ट योर वर्चुअल मशीन्स व्हिच यू हैव रिसेंटली क्रिएटेड, राइट. सो उसको एनक्रिप्ट करने के लिए मैं यहाँ पे there is a option under the setting pan, that is called disk. So click here in the disk. जब डिस्क में क्लिक करोगे यहाँ पर एक ऑप्शन होगा डेटा डिस्क, राइट. देन क्रिएट एंड अटैच अ न्यू डेटा डिस्क. ओके सॉरी, इसको हम डिलीट कर देते हैं. डिटैच. ओके यस. सो ये डेटा डिस्क को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं. ओके, इट डजंट मैटर. plive stab name -0. Okay, you can see here there is a concept called learn. So what is learn? The learn is a logical unit number of the data disk. This value is used to identify identify the data disk within the VM, and therefore must be unique for each data disk attached to a VM. Got it? Like here it is already written and explained. So why it's needed? So actually it's a provide it's kind of a logical unit number. It's a unique identified. So yeah, like identifier used for designated individual or collection of physical virtual machines or storage devices that host. Okay, so in Azure, LUNs are typically used in association with Azure Managed Disk and block access, which are block level storage volume managed by Azure and used in Azure virtual machines. Okay, let's take one example scenario. So imagine you have a virtual machines that require additional storage for database operations. So you can attach multiple managed disk in this VM. Here you can attach create and attach VM to the VM. So and each disk will have assigned a unique LUN. So for instance, like आप देख सकते हो first disk मैंने LUN 0 में लिया है. The first disk might be assigned 0. Then if you create another attach, then create here LUN 1. Okay, so like that up to 3 4 5 disk attach कर सकते हो. And this LUN are used in operating system and application running on the VM to access the correct storage volume. Okay, so
Yes, like this is the concept. I'm now detaching this one. Once I detach, let's move to the, I'm changing this 4 to 32 and apply. Before apply, so before apply, I forgot to additionally here do some changes in the additional settings. तो यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे there is one options in the disk settings. There is one options called encryption settings. So Azure Disk Encryption's ADE provides a volume encryption for OS Center data disk, and यहाँ पे मैं choose करूँगा OS Center data disk. Okay. So once ये होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो की वोल्ट रिलेटेड आस्किंग सम क्वेश्चंस. ओके, सो वाई इट नीडेड क्यों ये ज़रूरत पड़ रहा है की वोल्ट. सो क्रिएट न्यू, क्योंकि हम इसको लाइक एनक्रिप्ट करने जा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स रिक्वायर्ड. सो की वोल्ट नेम आप कुछ भी दे सकते हो, लाइक न्यू की वोल्ट VM1. गॉट इट. ये चलो ठीक है. ये होने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करना. आप स्क्रॉल डाउन करने के बाद लेट डिसाइड दिस डे रिटेंशन. what this means we will discuss in detail in our training part. Okay, so this is a thing. So I'm giving 90 to 7. Okay, returning delete vaults, and okay, let's now review and create. Just this is the key. Create. Cool. Once create होने के बाद we will run the validate. Okay, let's wait for the loading. It says deploying in progress. तो हम लोग इस बीच में पॉज ले सकते हैं. ओके, सो हमने क्रिएट कर लिया, एंड यू कैन सी दैट यहाँ पर डिप्लॉयमेंट सक्सेस दिखा रहा है. एंड यस, कूल. यहाँ पे अगेन मैं चूज़ करूँगा डेटा डिस्क एंड सिलेक्ट. ओके, ओके, गॉट इट. यस, सो यहाँ पर आने के बाद आप चूज़ कर सकते हो, लाइक आफ्टर क्रिएटिंग की वोल्ट. गॉट इट. की वोल्ट, it should return to your disk setting obviously and page, and from the key create a new key. And you can plab key 1. Okay, simple, just create. Once you have create, okay, data आप यहाँ पर आ सकते हो, लाइक अगेन इन द की सेक्शन में आप चूज़ कर सकते हैं. इन द वर्जन यू कैन सी आउट ऑलरेडी टेकन. सो ये होने के बाद सिंपल लाइक सेव. वंस यू हिट द सेव, ओके, ये क्या होगा ना, ये अपडेटिंग द डिस्क एनक्रिप्शन सेटिंग्स, लाइक so it may take a few minutes to validate validation in the process, so maybe 10 minutes. So
After a few minutes, after successfully update disk encryption settings, notification will pop up on the top right corner here, and हमको पता चल जाएगा कि okay, now we have successfully encrypt our Azure resources. So this is the process actually. So it may take time. So till actually I'm मैं यहाँ पर वीडियो पॉज कर देता हूँ, ओके, एंड लेटर आई विल रिज्यूम दिस वीडियो, एक्चुअली ये डिप्लॉयमेंट होने के बाद, ओके ओके गाइज, नाउ यू कैन सी दैट आप देख सकते हो, लाइक यू नो, यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो चुका है एंड डिप्लॉयमेंट सक्सीड हो चुका है, ओके, एंड द डिप्लॉयमेंट एज़्योर डिस्क एनक्रिप्शंस टू रिसोर्स ग्रुप, ओके, was successful. Got it. So this is how we can secure or encrypt our resources. Okay, this is one of the example, and you can like there is many more examples. So this is just a simple example. Okay, so okay, yeah, so thank you for watching this video, and I hope you will subscribe this channel. Thank you.